say that maintaining status quo. It means we are maintaining the things as it is. So here the topic itself is saying that RBI's status quo means RBI on the policy front is maintaining a status quo, means RBI is not going to change its policy stance. That is called the status quo. Okay. So what is RBI status quo? Let's check it. So the Reserve Bank of India has maintained its status quo on key interest rates for the fourth consecutive times in its recent Monetary Policy Committee meetings. So now what is this? What is the topic? It is regarding the key interest rates. Key interest rates. Now key interest rates are, first we must know what is the Monetary Policy Committee. This is a 6-member committee. Monetary Policy Committee is a 6-member committee, comprises of 3 members from RBI side, 3 members from RBI side, and 3 members from the government side. So there are total 6 members, 3 from RBI side and 3 from the government side. And the RBI governor is the chairman of the Monetary Policy Committee. Okay, sir. This is a statutory committee. Statutory committee means this committee has been made under a particular act, and the act under which this committee is made is the Reserve Bank of India Act 1934, the RBI Act 1934. Okay, sir. So the Monetary Policy Committee is a 6-member committee, is a statutory committee, and it is headed by the RBI governor. Now, what is the exact function of the Monetary Policy Committee and what is the history of it? Monetary Policy Committee is made in 2016. Okay, in 2016. And the ultimate task of Monetary Policy Committee is to decide the key interest rate, or you can say the policy interest rate of the RBI. And the policy interest rate of the RBI is called as the repo rate. Is the repo rate. We will discuss about repo rate in this article only for later. So first here, just understand what is Monetary Policy Committee. It is a 6-member statutory committee and 3 from the RBI side and 3 from the government side. It is headed by the RBI governor. Okay, and it decides the key policy rates, or you can say the repo rate. Okay, sir. What is repo rate? We'll discuss it. So the Monetary Policy Committee decides the repo rate, and in this particular article, they are saying that RBI has maintained its status quo on key interest rates for the 4th consecutive time in its recent MPC meeting. Now, legally, according to law, the Monetary Policy Committee must meet 4 times a year. Must meet 4 times a year. Keep this in mind. These kind of things can be asked. So, Monetary Policy Committee must meet 4 times a year. 4 times a year means within 3 months on a usual basis. But in practice, the MPC meets bi-monthly. Every 2 months they meet. So you can say yearly they are having 6 meetings now. In general, in practice they are doing it. But legally, the 4 meetings are binded on MPC. They must meet 4 times in a year. Currently, they are meeting 6 times a year, bi-monthly. Okay. So bi-monthly, they decides the key interest rates, or you can say the policy rate, that is the repo rate. Now, the article is saying maintain its status quo. It means the MPC in the November, we are reading the November current affairs. So the MPC maintained the status quo. It means the last time they met, they decided the interest rate or the stance on the interest rate. Both the things, now they are continuing with it. They are not changing it. It is in November 2023. Okay. So this is the kind of status quo they are maintaining. Okay. Okay. So this is the news. Now what is next? The RBI has maintained a withdrawal of accommodation stance since June 2023, when it raised the repo rate by 25 basis point to 6.5. Now what we need to understand here, this is 6.5 and this is the repo rate. Now first let's understand what is the repo rate. Repo rate is a very simple thing. What is repo rate? So whenever bank needs fund, whenever bank needs money, banks, for example, SBI. If SBI needs money, now they have
When we need money, we go to bank. When banks need money, they go to RBI, because RBI is a banker's bank. So when the banks need money, they go to RBI. When the banks need money, they go to RBI and they ask for the funds. Now, RBI will charge an interest rate on the loans the RBI will provide to the banks. Okay, it is as simple as that. When you go to bank, you ask for money, bank will give you money and bank will charge an interest rate on you. Okay. Similarly, when banks need money, they go to RBI. RBI will provide them money and RBI will charge an interest rate. That interest rate is called as the repo rate, and it is a short-term operation. Let me tell you, it is a short-term operation. So whenever the commercial banks in the country needs money, okay, and have a shortfall of money, they can ask or they can borrow money from the RBI. Now RBI will charge an interest rate on that borrowing. That interest rate is called as the repo rate. And this whole operation is a short-term operation, means this lending is for the short tenure. Okay, so short-term lending, banks are taking money from the RBI. RBI is charging an interest rate. That interest rate is called as the repo rate. Okay, sir. This is the repo rate, and this repo rate is considered as a policy rate. This repo rate is considered as a policy rate of the RBI. Okay, this is the chief interest rate. On the basis of this interest rate, other interest rates in the country or the interest rate scenario in the country changes according to this rate. And this rate, what will be the repo rate? What will be the percentage interest rate the RBI will charge on the banks will be decided by the MPC bi-monthly. Okay. And this time, in the November, the bi-monthly monetary policy committee said that we are not going to change it, and they are not going to change it. And what is that interest rate? That interest rate is currently 6.5. Currently, this is 6.5. In the November, that was 6.5, and it was almost fourth consecutive time. It means fourth consecutive time means for last 8 months they are not changing the interest rate, repo rate. That is 6.5. Okay, sir. So this is the thing. Now, one more important thing. Whenever the RBI or the Monetary Policy Committee comes up with the interest rate, so the two things they usually come up with. One is this interest rate that our MPC is coming and they're saying 6.5% would be the interest rate. This would be the repo rate. Okay. Now, on the parallelly, they also they also tell us that what is the policy stance of the MPC, Now, there are three type of policy stances, The first thing they come up with the 6.5%, that is the quantitative thing, that is the repo rate. And they also come up with some stances. There are three kind of stances. The first stance is the accommodative stance. Now, what is the meaning of accommodative stance? Accommodative stance means that next time whenever the MPC meet, they will try to reduce the repo rate. There is a possibility that in upcoming monetary policy committee meeting, they will try to reduce it. So if RBI is saying that 6.5% is the repo rate, MPC is saying that 6.5% is the repo rate, and with the accommodative stance, it means next time RBI will likely to reduce this repo rate. Okay, sir. So it gives a market and all the investors along with the government and the other stakeholders a larger picture regarding the economic or the monetary stance in monetary situation in the country. Okay, sir. So the first thing they come up with the accommodative stance. Accommodative means RBI is likely to reduce the monetary policy, reduce the repo rate in the upcoming monetary policy discussions, monetary policy meetings. Now, the second stance can be neutral. Now, what is the meaning of neutral? Neutral means RBI might increase, might decrease. Okay, so that is the neutral stance. And the third stance is the calibrative tightening. And tightening is simply means the RBI is going to increase this rate. Okay, so three stances are there. First is the accommodative stance, means RBI will likely to decrease the monetary interest rate in the upcoming discussions. Neutral means might increase, might decrease. And the third one is the
calibrative tightening. In the calibrative tightening, we can say that RBI is going to increase the repo rate. Okay. Now we must aware about that. What is the exact function of the repo rate and why the MPC is doing it, and what is the RBI's main function? So we are very much aware about RBI's functioning. RBI is the monetary policy or the monetary authority in India, the apex monetary authority. And RBI decides that how much money should be there in the system. So it is the RBI's prerogative to decide that how much money should be in the system. And parallelly, the production front, there are two fronts. One is the monetary front, the other is the fiscal front. The fiscal front is looked after by the government. So fiscal front means like all the budgetary aspect and the production related activities. So fiscal front is looked after by the government. The monetary front is looked after by the RBI. Now the RBI is responsible for the supply of money in the system. If there is excess money in the system, then RBI can suck it. If there is a lack of money in the system and lack of liquidity, then RBI can push some money in the system. So to maintain the liquidity in the system, the RBI is provided with some of the tools. Some are quantitative tools and some are the qualitative tools. Few quantitative tools, and the most important quantitative tool is the monetary policy, is the repo rate. This is called the policy rate. Now it is very simple. For example, what is repo rate? Repo rate is the rate of interest which is charged by the RBI when the banks need money. Okay. For example, the SBI need money. Now SBI is asking for money to the RBI. RBI is saying, okay, take this money. Now RBI is taking some interest from the SBI. Now, if this interest rate is high, this interest rate, for example, 10%, it means SBI need to pay more interest to the RBI. So SBI will remain with the less money because the more interest it is paying to the RBI. So when SBI will remain with the less money, then the lending rate or the lending capacity of the SBI will decrease. When the lending capacity of SBI will decrease, what will happen? Ultimately, the money in the market or the liquidity in the market will decrease. Okay, sir. So when liquidity will decrease, that would have a impact on the prices of the commodity. Okay, sir. So when RBI increases the repo rate, it means the banks, the commercial banks have to pay more interest to the RBI and they will left with the less money, and then less money will be lent in the market, and lending would be less, then the less liquidity. When less liquidity would be there, the prices of commodity will fall. So with the tightening of the repo rate, the RBI can control the interest rate, RBI can control the inflation rate in the market. So whenever there is a high inflation, RBI will try to increase this repo rate. Whenever there is a low inflation or the disinflation, in that case, what RBI will do? RBI will try to reduce this repo rate so that banks will have to pay less interest rate. Bank will left with the more money. They will lend more, and that lending will increase the money supply in the market, and that increased money supply in the market will ultimately pave the way for the rise in the price level. So now here we have a question like there should be inflation or not? Okay, because there must be a certain level of inflation. Okay, it is not like that inflation should not be there. No, it is not like this, because if commodities will be very cheaper, that is good for the consumer point of view, but from a production point of view, for the producer point of view, it is not a very good situation. On the other hand, if the prices are very high, that would be good situation, might be a good situation for the producer, but it would be bad for the consumer. So there should be a very delicate balance between these two parts, the consumer as well as the producer. So RBI have to maintain the interest rate in the country in a particular range. That range is called as the inflation targeting. So RBI is given a target, and within that target, RBI must maintain the inflation rate. Now let's check it. The RBI's inflation target is 4% with a tolerance band of ±2. Now we can say that it is 4 ± 2. 4 + 2 means 6. 4 - 2 means 2. So the minimum inflation the RBI have to maintain is the 2, and the maximum could be 6. But they try to maintain the inflation very much near to 4%. Okay, 4% is the
very comfortable band. But if it is going to 6, it means there might be uncomfortable situation. The inflation is, going out of the hand. The commodities price are very high. So the making things unsustainable for the people. On the other hand, if it is going nearly 2 or the below 2, that is situation in which the producer might not survive. So the 4 is the range, or the 4% inflation is the anticipated range that need to be maintained. Okay, sir. So the basic function of the RBI is to use its qualitative and quantitative tools, and one of the quantitative tool is the repo rate, and it tried to maintain the interest rate within the range of 4 plus minus 2. Okay, sir. So there is one more scenario we need to understand. At the time of COVID, what was happening, that there was a total shutdown, there was a total lockdown, and due to that lockdown, what happened? That the production activity was at halt. The laborers, mostly laborers, were going back to their homes, their home states. Hence, the production activity was at halt. The demand side was also impacted. The supply side was also impacted. But the supply side was facing huge trouble, because the basic demand was there, some essential commodities demand was there. But the production front or the supply side was facing trouble, the supply side. Okay. So when the supply side was facing trouble, in that case scenario, government said that we will provide incentives to the industries so that they can start their production again. Okay. So industries were requiring some of the incentive as some of the initial push again. So on the production front, the government was with the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. What they did, they tried to incentivize the industries so that they can start their production again. On the other hand, when we talk about the monetary front, on the monetary front, the Reserve Bank of India. Now, if the Reserve Bank of India, RBI, will try to increase the repo rate, what will happen? If RBI will increase the repo rate, then the banks or scheduled commercial banks have to pay more interest to the RBI. In that case scenario, they will left with the less money. And if they will left with the less money, they will lend less. And if the producers, if the companies, if the industries will not get enough credit, how will they try to expand, or how will they increase their production activity? Hence, at that time, at the time of COVID or the post-COVID, it was imperative for the RBI also not to increase the repo rate. Okay, it was imperative for the RBI also not to increase the repo rate. So RBI said, okay, we are not going to increase the repo rate for a certain period of time, so that there should be enough credit available in the market, and enough credit available for the industries, and the growth prospect would be there. So once the economy will come back to the pre-COVID level, then again we will start, as usual practice of the according to our principles and policy instances. Okay, so this was the thing. But what happened after COVID? Government come up with the incentives for the industries. RBI said we are not going to increase the repo rate. So almost for 2 years, 1.5 years nearly, RBI did not increase the interest rate. It was nearly 4% for a long period of time. So what happened? Due to that 4%, the commercial banks paid the less amount as the interest rate to the RBI. They left with the more money, they lended more, and there was more money in the market. But proportionally, the production activity was not at par with the liquidity in the market. So when there is a mismatch between the liquidity in the market, or the money in the market, and the production, then in that case scenario, that this mismatch paved the way for the inflation, because the liquidity is increasing, the money supply in the market is on rise. So this mismatch paved the way for the sudden inflation rise. Now, till certain instances, till certain time, RBI said it's okay. But after, when the overall consumer price index, consumer price index crossed this threshold of 6%, and it was nearly 7.5% at some point of time, then RBI said no, now we cannot tolerate it. Now we are going to increase this rate again. Okay. Then RBI increased this rate, and currently this rate is 6.5. So for 4 to this is 6.5.
Okay, sir. So that's the thing. I hope the COVID scenario you got it. Okay. Now, currently, RBI is saying that we are maintaining the status quo, the interest rate, and 6.5. Okay. Okay. So what is next? MPC voted unanimously. Okay. In the MPC Monetary Policy Committee, they decide because there are 6 members, 3:3, 3 government and 3 RBI. So they have to decide what should be the repo rate. Now, they decide with the majority vote, and if there is a tie in that case scenario, the RBI governor will cast its vote. So you can say in the MPC, the RBI have more say as compared to the government. So government is there so that both the monetary authority and the fiscal authority can can make a synergy and decide what should be the interest rate scenario. Okay, sir. Now, what are the implications for the economy and financial market? It signals now what RBI is saying currently. RBI is saying that withdrawal of accommodation. Accommodation means likely to decrease the interest rate. Now RBI is saying withdrawal of accommodation. It means it is less likely that RBI will decrease the repo rate. Okay, because they withdraw this accommodation stance. So this is less likely that RBI will reduce it. Means RBI might further hike it. If RBI will hike it, then less money would be available in the system. Okay. So it signals that the RBI is concerned about inflation. That's why they said we are not no more be accommodative. We are not going to reduce it, because if RBI will reduce this rate, then what will happen? The money supply in the system will increase. That would further increase the inflation, which is not a good scenario. So RBI is concerned about inflation and is willing to sacrifice some growth for the price stability. Price stability is important. Now, if RBI will increase it, what will happen? If RBI will increase it, money supply in the system will decrease. When the money supply will decrease, that will automatically pave the way for the less inflation. Okay, RBI will attain try to maintain the target of 4 plus minus 2. But on the other hand, if RBI will increase it, money supply will decrease. But on the other hand, the industries will able to avail less credit because the banks will remain with the less money. Okay, sir. So that would ultimately undermine the ability of the industries to access more credit. So the expansion of the industry or some other activities of the industry will be, maybe, deteriorated or the adversely impacted due to lack of credit. So RBI is blatantly saying that RBI is concerned about inflation and is willing to sacrifice some growth for price stability, because the growth prospect will definitely be curtailed. Growth prospect will be curtailed because less money would be available if RBI will increase this repo rate. So it signals that the RBI is concerned about inflation and is willing to sacrifice some growth for the price stability. Okay. RBI's inflation target is this. Now, very important question. Who decides this inflation target? Inflation target 4 plus minus 2 is decided by government. Okay. This inflation need to be maintained within this range by the Reserve Bank of India. But this target has been decided by the Union government. Keep this in mind. This target 4 plus minus 2 is the target decided by the Union government. But this need to be maintained within this range by the RBI. Okay, sir. Keep this in mind. So indicates that the RBI is preparing for a gradual normalization of monetary policy as the economy recovers from the pandemic shock. Now, very simple. We discussed now in the beginning of the post-COVID phase, RBI was firm that we are not going to increase the repo rate because increasing in the repo rate would ultimately, reduce the credit for the industry. So we are, giving the growth prospect. So at that time, RBI was not very much, normal with the monetary policy aspect. It was more of the, going with the COVID-related measures so that the industries can be revived. But now RBI is saying that economy more or less recovered from the COVID-related shocks or the pandemic-related shocks. So we are again normalizing the monetary policy, means the business as usual should be there. Now the special emphasis should not be given to the production activity, okay? Because ultimately we already took enough time
and had the less interest rate, less repo rate to give emphasis to the production activity. Okay. It affects the borrowing cost and bond yields in the market. Now, this is very important. These kind of things UPSC may ask because this is a little bit analytical. It affects the borrowing cost. As simple as that. If RBI is saying we are no more be accommodative, it means 6.5 is the current interest rate, and the next time when they come, the MPC come, either it will maintain the 6.5 or it will increase it. It will increase it. Now, if the 6.5 and they will further increase it, then there would be less money with the banks. Scheduled commercial banks have to pay more interest to the RBI. They will left with the less money, and when they will left with the less money, they will release it. They will the remaining money they will try to lend, but they ultimately try to increase their lending rates. Okay, because bank have to pay more money to the RBI in terms of interest. So what they will do, they will transmit this to their lending rates. Okay, they have to pay more money to the banks. The scheduled commercial banks have to pay more money to the RBI. So what they will do, they will try to increase their lending rates. So they will lend at the more interest rate. So what is the relation we can draw? That if the RBI is going to increase its monetary policy rate or the policy rate, that is a repo rate, then the lending rates of the bank will also increase, may increase. Let me tell you, it is not always that there would be a proper transmission, but there is a possibility that bank's lending rate might be increased. There's a possibility. UPSC sometimes play with the words, so be very cautious while reading the question, the language. So it affects the borrowing cost. Definitely, if somebody is borrowing from the commercial banks, you are going to SBI and asking for loan, they are saying it is a 10% interest rate. So you will say, oh, 2 months back you were taking only 8%, now you have 10%. Why 10%? So the banks will say, oh, because RBI increased the repo rate, we have to pay more interest rate to them and we have to manage it. So to compensate the money it is going to pay to the RBI, the banks increase their lending rates. Wait for a moment. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. Okay, so this paragraph is particularly very important. You must, after the class, must make small notes of these. If you are, if you want that some kind of question might be asked, let me tell you. So it affects the borrowing cost. Borrowing cost would be impacted. You are going to this. I discussed it recently. Okay. So the banks will charge more money. The borrowing cost will be high, and the bond yields in the market. Now this is very important. What is bond yields? Bond yields is very simple thing. Bond yield is the return our investor is going to get on a bond. Okay, sir. So if you are investing in a bond, now this is very simple thing that if you are going and purchasing a bond, for example, the fixed deposit is also kind of bond. So usually on the bonds, what happens if you are buying a 100 rupees bond, you are buying a 100 rupees bond. Now the maturity is 1 year. Okay, time maturity is 1 year, and the interest rate they are going to pay you is 6%. Now usually on the bonds, the interest rate is fixed. 6% interest rate you are going to get for the 1 year 100 rupees bond. Okay, it is as simple as that. But bond yields changes. How bond yields changes? Because when you have bonds, when you have a bond, now this same bond, the 100 rupees bond with 1 year maturity and 6% interest rate, this is a bond. Now what happens sometimes, you are purchasing this bond, the 100 rupees is its nominal value or the face value. 100 rupees is the face value, but sometimes somebody who have purchased it, for example, you have purchased it. Now after 3 months, you are thinking that this bond is not going to yield me more. Means I'm not going to get more money from this particular bond. I have to invest somewhere else. So what will you do?
you cannot change the maturity time, you cannot change the interest rate, you cannot change, because it is the issuer who will decide. But the 100 rupees. Now, if you will go to somebody and try to sell this bond, these things, the time maturity you cannot change, or the interest rate you cannot change. The face value is 100 rupees. Now, if you will try to sell this to somebody in 100 rupees, they might not buy. There is a possibility that they will not buy it, because they might see somewhere else some prospect. So there is a less possibility that somebody will buy on the face value. So what you will do? But you need money. You are seeing prospect somewhere else. You want to invest money in somewhere else. So what you will do? You will try to sell this bond less than the face value. Below face value, you will try to sell it. So you're selling it to 90 rupees. You're selling this to 90 rupees. Now in 90 rupees, you sold it and somebody took it. Now, somebody who took it, for example, X person is took it. Now X person bought it in 90 rupees. Okay, but face value is 100. All the things on the maturity, this particular person will get 106 rupees, 106 rupees. Okay, sir. But the X person who bought it, okay, bought it in 90 rupees only. So the overall profit he will get is the 16 rupees. Okay, sir, 16 rupees. It means the return this particular person, the second person, return, the return the second person got is the 16 rupees. But if what would have happened if the first person did not sell it? He would have got only 6 rupees because he bought the bond in the 100 rupees. So 6 rupees and 16 rupees. It means the yield, the return on the investment has been priced. This is called bond yield. So bond yield changes. Bond yield changes according to the other interest rate prospect in the market. Are you getting this point? This is very important point. Bond yields changes according to the other interest rate scenario. Just think about it. Why the first person trying to sell this particular bond? Because that person seeing prospect somewhere else. He was thinking that why I'm investing my money in this particular bond, which is the fixed rate instrument bond. After 1 year, I will get only 6% interest. He's seeing interest rate 12%, 13% somewhere else, or the return somewhere else, which are better than this particular agreement. Then he will try to sell. So it is the interest rate scenario in the overall country, okay, which ultimately impacts the bond yields. Okay, sir. So the borrowing cost is impacted by RBI's lending rate. RBI's it's a kind of RBI lending rate, repo rate, and the bond yields. Bond yields are also impacted because if somebody investor will see prospect somewhere else, what they will do? They will try to sell the bonds. Okay, sir. So these are the two things which are going to impacted by the RBI's rate. Now the withdrawal of the accommodation stance implies that there is a less scope for the further rate cuts. What is the withdrawal? What is the accommodation? Accommodation means RBI will decrease the interest rate in the future. Now, RBI is saying we are not going to be accommodative anymore. It means there is a less scope for the further rate cuts. Means they will not have the rate cut, and when they will not have the rate cut, either the rate would be same or they will increase it. And if they will increase it, that would have subsequent implication on the interest rate scenario in the country. When they will increase the repo rate, the lending rate will increase, the borrowing cost will also increase, the bond yield will also get impacted. Okay. Now, could be more rate hikes in the future. There is a possibility of rate hike in the future if inflation persists. So why they hike the interest rate? Why they hike the repo rate? To control the money supply in the system. And why they want to control the money supply in the system? To control the inflation. So if inflation persists, then there is a possibility that RBI will go on the further rate cuts. Okay, sir. This increases the expectation of higher interest rates and reduces the demand for bonds. This is very important. Now, if RBI is increasing the repo rate, this increases the expectation of higher interest rate. There is a possibility there would be more interest rate because the transmission of monetary policy will take place. RBI is increasing the repo rate, and that would ultimately it is a kind of expectation because RBI might increase in the next further because they are not having the accommodative stance anymore. So there is an expectation, there is an anticipation that next time there is a possibility of higher interest rate and reduces the demand for bonds. Now this is very important. Why? Because
the bonds in the bond market. What is happening on the bond market? In the bond market, you will get the fixed interest rate. This case, we discussed it. In the bonds, what is happening? Bond is a fixed interest rate market. Okay. So if there is a anticipation that interest rate would rise, then nobody wants to invest in these bonds. So the bonds, the demand of the bonds will decrease. Okay, sir, because the general interest rate scenario in the country is going upward. So nobody wants to invest in these kind of bonds, leading to higher bond yields. Now, this is very important. When the demand for the bonds will decrease, then what people will do? People will try to sell it. When people will try to sell it, so the 100 rupees bond, this case again, bond yield, 100 rupees bond was sold to somebody in the 90 rupees. Okay, because this person seeing prospect somewhere else, not interested in the bonds. That's why the demand for bond decrease. And when the demand for bond decreases, somebody try to sell that bond at any cost. 100 rupees bond, they are selling at the 80 rupees, 70 rupees. But overall return on the bond will depend on the interest rate. Okay, and that interest rate is 6% in this case. So if the bond is sold at 80 rupees only, then overall this person will get 26 rupees. If the bond is sold on the 70 rupees, this person will get 36 rupees. Are you getting my point? So the ultimately reduces the demand for bonds, leading to higher bond yields. Bond yields will increase, sir. This is very important. Sometimes we got confused. Okay, that's why you can, have a paper and pen and try to make the relationship with the bond yield and the RBI's policy rate. There is a possibility. What is the connection between the bond yields in the market and the repo rate? There is a possibility of connection. There is no certainty. Let me tell you. Okay, that's why UPSC sometimes play with the, the words, the vocabulary it uses, might, may, these kind of things. So you should be very much aware while reading the questions. Okay, sir. So this, try to understand once again. If you are still not, getting it because I don't have pen paper, then you can ask me separately the relationship between bond yield and the RBI's repo rate. This is an important question. There is a possibility this might be asked. Okay. So leading to higher bond yields. So the relationship reducing demand for bonds and the higher bond yields. Bond yield is increasing. Bond yield is increasing, but that doesn't mean that the demand for bond will increase. No, yield is a little bit different kind of thing. Higher bond yields also increases the cost of borrowing. Now, cost of borrowing is simply related with the interest rate, with the repo rate. Okay, for the government, corporates, and the households. Now, it is as simple as that, because if borrowing cost will increase for all of them. If the interest rate scenario is changing, if the repo is higher, then that will be difficult for all of them to borrow because the lending rate would increase. Okay, so this particular paragraph is important. Now, steps to cope with the withdrawal of the accommodation. The government has announced various fiscal measures to support economy during and after the pandemic, such as stimulus packages, tax relief, expenditure reprioritization, asset monetization, and privatization plan. Now, this is the scenario after the pandemic. What happened in the pandemic? There was almost lock. Hello? There will be some thanks, sir. Sorry, आवाज नहीं आ रही आपकी? थोड़ा हिंदी में भी समझाएंगे सर? Okay, okay, okay. Wait. Okay, let me explain you bilingually. Okay. The point is that government जब कोविड आया था, कोविड के इमीडिएट बाद में गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस किए थे बिकॉज टोटल लॉकडाउन था. तो लॉकडाउन के टाइम पे प्रोडक्शन एक्टिविटी हो नहीं रही थी. पर जब प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही थी, ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट ने, जब लॉकडाउन ओपन हुआ ग्रेजुअली, तो लॉकडाउन ओपन होने के टाइम पे जो इंडस्ट्रीज थी, उन इंडस्ट्रीज को उन्होंने क्या किया? रिलीफ पैकेजेस दिए. रिलीफ पैकेजेस में उन्होंने क्या किया कि उनको कुछ इंडस्ट्रीज को उन्होंने इंसेंटिव्स दिए, कुछ को स्टार्ट करने के लिए टैक्स रिलीफ दिया कि आपको कम ही टैक्स पे करना पड़ेगा या फिर 1 साल के लिए आप टैक्स मत देना, ताकि वो वापस से प्रोडक्शन एक्टिविटी को क्या करेंगे? इनहांस कर पाएंगे. और उसके साथ ही जो आरबीआई था, आरबीआई क्या कर रहा था कि अपनी पॉलिसी रेट को, इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा रहा था.
जब पॉलिसी रेट को आरबीआई नहीं बढ़ाएगा तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा मनी जो होगी वो मार्केट में अवेलेबल रहेगी, बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहेगा कि बैंक आगे क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। और जब बैंक आगे दे पाएंगे तो इंडस्ट्रीज को पैसा मिलेगा, तो ओवरऑल जो ग्रोथ का सिनेरियो है वापस कंट्री में वो वापस मैनेज हो पाएगा। तो गवर्नमेंट ये कर रही थी कि स्टिमुलस पैकेज, टैक्स रिलीफ दे रही थी और एसेट मोनेटाइजेशन भी कर रही थी, प्राइवेटाइजेशन भी कर रही थी। गवर्नमेंट के जो एसेट्स थे, जो गवर्नमेंट की पीएसयूज थी, जो लॉस मेकिंग थी, उनको उन्होंने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के तहत क्या कर दिया, बेचा। काफी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन किया। उस प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, गवर्नमेंट को पैसा मिला और उस पैसे को गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में खर्च किया। ये कब हो रहा था, ये हो रहा था पेंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कि 2019 में आप जान रहे हो कि इंडिया में तो फरवरी 2020 के आसपास आपको कोरोना देखने को मिला। 2020 पूरा कोरोना में था, ठीक है। तो और काफी शुरू में 3-4 महीने तक तो काफी लंबा लॉकडाउन रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस समय काफी एक्सपेंडिचर बेस्ड हो गई थी कि हमको पहले आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी को वापस रिवाइव करना है। और आरबीआई को भी ये इम्पेरेटिव था कि वो एकदम टाइट ना करे, क्योंकि अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को बहुत टाइट कर देगा तो बैंकों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा आरबीआई को, और बैंकों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो बैंक इंडस्ट्री को नहीं दे पाएंगे, ठीक है सर। तो ये हो रहा था। Government and the RBI have coordinated their action to ensure smooth market functioning and debt management. This is very important. दो एस्पेक्ट होते हैं सर, एक मॉनेटरी एस्पेक्ट होता है और एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है। फिजिकल मतलब जो राजकोषीय नीति होती है, और मॉनेटरी एस्पेक्ट मतलब जो मौद्रिक नीति होती है। तो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों के बीच में एक क्या होना चाहिए, एक सिनर्जी होना चाहिए। अगर उनके बीच में सिनर्जी नहीं रहेगी, तालमेल नहीं रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि अगर आपका आरबीआई ने पैसा सिस्टम में ज्यादा डाल दिया है, आरबीआई ने अगर पैसा सिस्टम में ज्यादा डाल दिया है और उसी के पैरेलल में प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो वापस क्या हो जाएगा, पैसा ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो डेफिनेटली अगर उनका कंपैरिजन होगा तो कमोडिटीज का दाम बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। सिमिलरली इसका उल्टा होगा, अगर प्रोडक्शन ज्यादा है और मनी सप्लाई कम है तो कमोडिटीज का दाम कम हो जाएगा। और दोनों ही नहीं चाहिए, अपने को एक बैलेंस बना के चलना है इन्फ्लेशन टारगेट के हिसाब से, ठीक है। तो दोनों आरबीआई और गवर्नमेंट को क्या है, कोऑर्डिनेटेड करने की जरूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है आरबीआई हैज आल्सो कंडक्टेड स्पेशल ओएमओज। ओएमओज क्या होते हैं, ओएमओज होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है डायरेक्टली। ये परमानेंट है, इसमें किसी तरीके का कोई प्लेजिंग नहीं हो रहा है, इसमें वो खरीद ले रहा है, बेच दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए आरबीआई के पास अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आरबीआई उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में बेच देता है। तो मार्केट में जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जाएगी तो अगर 5 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी गई तो 5 करोड़ रुपया मार्केट से कहाँ आया, आरबीआई के पास आया। तो 5 करोड़ रुपया मार्केट में क्या हो गया, कम हो गया सर। तो ऐसे भी मार्केट से मनी को क्या कर सकता है, आरबीआई सक्षम कर सकता है। सिमिलरली अगर आरबीआई को मार्केट में मनी डालनी है तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा तो मार्केट में पैसा जाएगा, और पैसा मार्केट में जाएगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो ये निर्भर करता है आरबीआई पे कि उसको क्या सिनेरियो क्रिएट करना है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द आरबीआई दैट विच काइंड ऑफ सिनेरियो इज इंपेरेटिव अकॉर्डिंग टू द मार्केट इन्फ्लेशन सिनेरियो, ओके। अगेन इज द ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट भी पूछा जा सकता है। ऑपरेशन ट्विस्ट में कुछ नहीं होता है, जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट होती है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट मतलब आपको पता है कि आरबीआई जो एक होते हैं शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट और एक होती है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट में क्या करते हैं, जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी थोड़ा सा सिक्योरिटीज को आरबीआई क्या करता है, खरीदता है। ध्यान से सुन लेना, इसको आप वापस देख लेना अच्छे से, जाके मैं बता रहा हूँ एक बार शॉर्ट में। ऑपरेशन ट्विस्ट में आरबीआई लॉन्ग टर्म की जो सिक्योरिटी होती है, लॉन्ग टर्म की, उन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदता है, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है उनको बेचता है। तो ये साइमल्टेनियसली करता है, देखना, लॉन्ग टर्म को खरीद रहा है, शॉर्ट टर्म को बेच रहा है। और लॉन्ग टर्म को खरीदने से और शॉर्ट टर्म को बेचने से ये होता है कि अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट होती है वो क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। ऑपरेशन ट्विस्ट को आप जाके पढ़ लेना थोड़ा सा शॉर्ट में, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या है सर। आरबीआई लॉन्ग टर्म को खरीद रहा है और शॉर्ट टर्म को बेच रहा है साइमल्टेनियसली।
और इसका अल्टीमेट एम होता है कि जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है इससे, ठीक है। दैट इज ऑपरेशन ट्विस्ट। फिर आता है जीसैप। जीसैप क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। ये भी ऐसा ही है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एक्वायर कर रहे हैं सर, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एक्वायर कर रहे हैं। और ये एक्वायर क्यों कर रहे हैं, वापस उनको वही मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है, इन्फ्लेशन सिनेरियो। तो ये जीसैप प्रोग्राम भी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, ठीक है सर। तो दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, the government and RBI also taken steps to address the structural issues and supply side bottlenecks। supply side bottlenecks का मतलब है कि जो सप्लाई साइड इशू है, आपको पता है कि डिमांड होती है, एक सप्लाई होती है। डिमांड कौन कर रहा है, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, कॉमन मैन। तो एक कंज्यूमर की डिमांड होती है और एक कंज्यूमर अपनी तरफ से डिमांड करता है, और सप्लाई कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर। आप देखोगे कि इंडिया में डिमांड साइड से कंस्ट्रेंट कम आते हैं, डिमांड साइड से कंस्ट्रेंट रिलेटिवली कम आते हैं। हमारे कंस्ट्रेंट आते हैं मोस्टली सप्लाई साइड से, कि इंडस्ट्रीज जो है वो इनफ कई बार क्या नहीं कर पाती, इनफ सप्लाई नहीं कर पाती। तो सप्लाई साइड के बॉटलनेक्स मतलब इंडस्ट्रीज को जिन चीजों की जरूरत है, चाहे वो क्रेडिट की जरूरत है, चाहे वो अदर इंसेंटिव चाहिए, चाहे वो टैक्स रिलीफ चाहिए, ठीक है, चाहे वो कंप्लायंस रिलेटेड इशू है, तो ये सारी में इंडस्ट्रीज को क्या किया जाए, थोड़ा इजी रखा जाए और उनको क्या किया, इंसेंटिवाइज किया जाए। तो आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ने सप्लाई साइड बॉटलनेक्स जो है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं अल्टीमेटली, उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करी है। The government has announced various reforms in agriculture, labor, infrastructure, financial, सब में रिफॉर्म्स किए हैं गवर्नमेंट ने, वो आप काफी हद तक पढ़े होंगे, ठीक है। चैलेंजेस, परसिस्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन अबाउट द आरबीआई टारगेट रेंज फॉर सेवरल मंथ। ये तो चैलेंज है कि भैया काफी लंबे समय तक जो है वो इन्फ्लेशन क्या रह गया था, आरबीआई की रेंज से बाहर रह गया था, ठीक है। रिड्यूस द रियल इनकम एंड परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर क्या होती है, खरीदने की क्षमता। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा केस है, अगर आपके पास आज 100 रुपए है, आज क्या है 100 रुपए, आपके पास आज 100 रुपए है, वो एक साल बाद भी 100 रुपए रहेंगे। अगर आपने 100 रुपए कहाँ रख रखे, अपनी तिजोरी में रखा हुआ है, वो 100 रुपया रहेगा। तो 1 जनवरी को अगर 100 रुपया है तो अगले साल भी 1 जनवरी तक भी 100 रुपया रहेगा। पर अगर इस एक साल में ईयर ऑन ईयर अगर इन्फ्लेशन देखो तो 5% था, कितना 5%। अब जब आपके पास आज 1 जनवरी पे 100 रुपए हैं और उस समय उस डेट पर जिस पर आपके पास 100 रुपए है, उस डेट पर एक कमोडिटी 100 रुपए में मिल रही है, ठीक है, बट आपने उस समय उसको नहीं खरीदा। अगले साल 1 साल बाद आपके पास 100 के 100 रुपए ही रखे हैं तिजोरी में, बट वो कमोडिटी 5% इन्फ्लेशन से बढ़ के 105 रुपए की होगी। तो वो 100 रुपए में 1 जनवरी को आप वो चीज खरीद सकते थे, बट फिक्स 1 साल बाद उसी 100 रुपए में वो चीज नहीं खरीद पा रहे। तो आपका मनी तो वैसा का वैसा है, बट क्योंकि कमोडिटीज का प्राइस बढ़ गया तो आपकी परचेजिंग पावर क्या होगी, कम हो गई सर। परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। तो इसी को कहते हैं अल्टीमेटली कि आपकी रियल इनकम रिड्यूस हो जाती है। कई बार रियल इनकम रिड्यूस, एग्जांपल के लिए क्या हो रहा है, जैसे 10,000 रुपए किसी पर्सन की सैलरी है, अब वो 10,000 रुपए की सैलरी अगर अगले साल भी 10,000 रुपए रहेगी, आप समझिए ये कॉमन मैन के साथ बहुत ज्यादा होता है। अगर 10,000 रुपए किसी पर्सन की सैलरी है पर अगले साल भी ईयर ऑन ईयर उसका 10,000 रुपए ही सैलरी है, तो आप देखेंगे कि कॉमोडिटीज का प्राइस तो चेंज हो गया ना सर। कॉमोडिटीज जो आटा पहले 40 रुपए किलो था वो 45 रुपए किलो हो गया। तो अगर उसकी सैलरी 10 से 10 ही रही पर कॉमोडिटीज वो पहले 10,000 में जितनी खरीद पा रहा था अब 10,000 में उतनी नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसकी जो रियल इनकम है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। हुई ना रियल इनकम रिड्यूस, क्योंकि वो खरीद नहीं पाएगा उतनी चीजें। इसीलिए आप हमेशा किसी भी जॉब में देखिए कि एक हाइक का सिस्टम रहता है, डीए का सिस्टम रहता है, डियरनेस अलाउंसेस, उसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। और डियरनेस अलाउंस जो होता है वो आपका मोर और लेस किससे एफिलिएटेड रहता है, इन्फ्लेशन रेट से। तो किसी का डीए बढ़ रहा है या ये सब चीजें बढ़ रही है तो वास्तविकता में वो इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई चीजें होती है। कई लोगों की सैलरी साल बाय साल बढ़ रही है पर वो साल बाय साल एग्जैक्टली बढ़ नहीं रही, वो रियल इनकम नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। पहले 30,000 सैलरी थी, अगले साल 35,000 हो गई, बट अगर इन्फ्लेशन के में वो एडजस्ट हो जा रही है तो एग्जैक्टली रियल इनकम बढ़ नहीं रही है, उतनी की उतनी इनकम है। 5,000 में वो खुश बहुत हो जाते हैं, अरे सैलरी बढ़ गई है, बट वास्तविकता में कमोडिटीज का प्राइस उसी प्रोपोर्शन में बढ़ गया है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। रियल इनकम आपकी या तो घट गई है या बराबर है या कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो रियल इनकम में इंक्रीज होना इज अ डिफरेंट सिनेरियो, वो इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है सर। परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। स्पेशली द पुअर वल्नरेबल, इट कुड आल्सो अफेक्ट द एक्सटर्नल बैलेंस एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ये भी है सर, एक्सटर्नल बैलेंस तो होता ही है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी आप जानते हैं क्या होती है, ठीक है। जो एक्सचेंज रेट है, जो मनी का एक्सचेंज रेट होता है रुपये का, आपका एक्सटर्नल बैलेंस उस पर इम्पैक्ट होता है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इम्पैक्ट हो जाएगा उससे। ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से इंटर
रिलेटेड है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसमें से एनालिटिकल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, इसको आप कम से कम 2-3 बार पढ़िएगा, ठीक है। द अनसर्टेनिटी एंड द वॉलेटिलिटी इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट, ये भी बताया है सर, ठीक है। अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी तो है ही ग्लोबल एनवायरनमेंट में, आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है, अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है, ठीक है। रशिया और चाइना का जो एक्सपांशनिज्म है, ठीक है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ये सारी चीजों से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक टेंशन क्रिएट हुआ है, सप्लाई चेन डिसरप्शन आ रहे हैं, और सप्लाई चेन डिसरप्शन आएगा। अभी आपने देखा कि जो हाउथीज रिबेलियन है यमन में, उन्होंने जो वहाँ पे आसपास रेड सी से जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन उसको इम्पैक्ट किया, उसको इम्पैक्ट करने से क्या हुआ, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट पड़ा, और जब सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट पड़ता है तो कमोडिटीज के प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, और इंडिया तो इतनी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, इंटरकनेक्टेड है, तो अदर इकोनॉमीज में या अदर ट्रेड रूट्स पे अगर किसी भी तरीके का कोई एडवर्स इम्पैक्ट होता है तो उसका जो रेट है वो इंडियन इकोनॉमी को झेलना पड़ता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है सर, और आरबीआई के पास डिलेमा तो होता ही है। डिलेमा मतलब संशय में रहते हैं कि भैया ग्रोथ सपोर्ट करें लोअर इंटरेस्ट रेट रख के, या फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल करें हाई इंटरेस्ट रेट रख के, ये तो डायलेमा रहता ही है। इसीलिए आरबीआई को और गवर्नमेंट को दोनों को सिनर्जी में काम करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए एमपीसी बनाया है, क्या 3 मेंबर आरबीआई के, 3 मेंबर किसके, गवर्नमेंट के, ठीक है सर। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सर, इसको आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये ऑपरेशन ट्विस्ट को भी पढ़ना आप, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी हैं, जीसैप को भी पढ़ना आप, मैंने बता दिया एक बार फिर भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल अपना है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द व्हाइट गुड्स। देखिए पीएलआई स्कीम के बारे में हमने पहले भी बात करी है। पीएलआई स्कीम क्या होती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब है ये उसी से जुड़ी हुई है। ये पीएलआई स्कीम जो है ये स्टार्ट ही आत्मनिर्भर भारत के अंडर हुई थी 2020 में, ठीक है, कोविड के बाद। तो आत्मनिर्भर भारत में क्या हो रहा था कि जो पीएलआई स्कीम है उसमें इंडस्ट्रीज को ना उनके प्रोडक्शन के बेस पे क्या दे रहे थे, उनको इंसेंटिव दे रहे थे कि आप सर्टेन अमाउंट प्रोड्यूस करोगे तो आपको कुछ ना कुछ उससे जुड़ा हुआ इंसेंटिव रहेगा। सबसे पहले ये व्हाइट गुड्स के लिए स्टार्ट हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बट उसको एक्सपांड करके फिर 10 और सेक्टर के लिए लाया गया, और अभी भी चल रही है, ठीक है। तो ये क्या है न्यूज, व्हाट इज द न्यूज? PLI scheme for white goods in India reflect significant changes aimed at providing more oversight, clarity, flexibility of participating companies. Not very important, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। मैं आपको बता, PLI आपको पता चल गया क्या है। PLI में इंसेंटिव दिया जाता है इंडस्ट्रीज को। अब यहाँ रहा व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स क्या होता है? व्हाइट गुड्स में समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि गुड्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूमर उनको यूज कर रहा होता है, और कैपिटल गुड्स मोस्टली क्या होते हैं, जो आप मशीनरी होती है जिनको यूज करके आप अल्टीमेटली कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं। और कंज्यूमर गुड्स में दो तरीके के गुड्स होते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर गुड्स में एक गुड्स होते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो एक तो आपने चिप्स खरीदा मार्केट से और आप खा गए, वो तो बिल्कुल क्या हो गया, तुरंत कंज्यूमर गुड है बट तुरंत खत्म हो गया। एक होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल का मतलब है ऐसे कंज्यूमर गुड्स हैं जो कि लंबे समय के लिए रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वॉशिंग मशीन खरीदी है तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, लॉन्ग समय के लिए आपके पास रहेगा, ठीक है। सिमिलरली आपने एसी खरीद लिया तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल है। तो मोस्टली ये सारी चीजें जो होती है उन्हीं को क्या कहते हैं, व्हाइट गुड्स कहते हैं सर, ठीक है, व्हाइट गुड्स। तो एसी हो गया आपका, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सब क्या है, व्हाइट गुड्स है। आपकी लाइट्स हैं वो भी व्हाइट गुड्स में आती है, ठीक है। तो ठीक है सर, इसमें आपके लिए क्या है, आप पीएलआई स्कीम जो है, अब इसका पूरा मगअप तो नहीं करना है बिकॉज ये स्कीम अलग अलग सेक्टर के लिए चल रही है, बट हाँ आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। अब हर सेक्टर के लिए अपन मगअप नहीं कर सकते, आई वुड नॉट रिकमेंड इट, ओके। तो इसकी न्यू गाइडलाइन आई है क्लैरिटी के लिए, एयर कंडीशन एलईडी इंडस्ट्रीज इन इंडिया मेक इंडिया एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है। आप अगर व्हाइट गुड्स में इंडिया की इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव दोगे तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है सर। और क्या है, आईएफसीआई के बारे में आपको पता है सर। आईएफसीआई जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है, इसके लिए नो नीड टू मगअप, पर आईएफसीआई के बारे में जान लो, ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, ध्यान रखना। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी एक डिपार्टमेंट है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है।
IFCI, ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने का इसका अल्टीमेटली काम है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। DPIIT के बारे में भी आपको पता होगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है ये डिपार्टमेंट। ठीक है, ये जो इंटरनल ट्रेड है उसको देखता है। दो एजेंसीज के बारे में इसमें देख लेते हैं हम, बाकी इंटरनल डिटेल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। PLI के बारे में यहाँ डिटेल दी गई है। PLI scheme is a scheme that aims to give companies incentive on the incremental sales from production, मैन्युफैक्चरिंग एंड डोमेस्टिक यूनिट। ठीक है सर, ठीक है, इंक्रीमेंटल सेल्स पे वो क्या करता है, इंसेंटिव देता है, प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव देता है। Invites foreign companies to set up units in India because it is under Atmanirbhar Bharat. It means you need to increase the production within India. Encourage local companies to set up or expand existing manufacturing units. If the companies are local, then try to set a new unit or the greenfield unit or the brownfield. Try to expand the existing one. More employment, cut down countries relies on import. Okay, these are the simple things. It started with the electronics in 2020, but later 10 other sectors have been added. Okay. Okay. MPC meeting, again the MPC article. So many things we already discussed, so we will go a little bit quick with this MPC meetings. So MPT retained the benchmark interest rate unchanged for the fourth time in a row, and that is 6.5. So what is the current repo rate? That is 6.5. We discussed it. Important points. Repo rate held steady. Okay, 6.5. GDP and inflation forecast. RBI, what is forecasting? Forecasting is a kind of prediction with the data. Okay, prediction with the study of data is the forecasting. So GDP and inflation forecasting, अनुमान लगाना जिसको कहते हैं। तो GDP का और इन्फ्लेशन का फोरकास्ट RBI ने बताया है। ठीक है, दैट्स ओके, नॉट डेटा इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट यू मस्ट कीप इन माइंड व्हाट इज द रेपो रेट। हेडलाइन इन्फ्लेशन, नाउ हमको पता है इन्फ्लेशन ना दो तरीके से निकाली जाती है। इन्फ्लेशन दो तरीके से निकाली जाती है, एक होती है CPI और एक होती है WPI। CPI होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होता है WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जो CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, वो CPI ऐसा है कि आपका जो कंज्यूमर को फील होता है, एग्जैक्टली कंज्यूमर जिन गुड्स को यूज कर रहा है उन गुड्स की रेट्स में क्या ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ रहा है, उसके बेस पे एक कैलकुलेशन की जाती है, उसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, वो होलसेल लेवल पे होता है, जो कंपनीज का आउटलेट प्राइस होता है उसके बेस पे निकाला जाता है। हम बात कर रहे हैं CPI की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उस CPI में वापस दो तरह की इन्फ्लेशन होती है CPI के अंदर, एक होती है हेडलाइन और एक होती है कोर। हेडलाइन का मतलब है जितनी सारी कमोडिटीज है सबको ले लो, और कोर इन्फ्लेशन में आप क्या करते हो, हेडलाइन में सारे ले लेते हो और कोर में आप क्या करते हो, फूड और फ्यूल। एक तो फ्यूल नहीं लेना है और एक फूड नहीं लेना है, तो फूड रिलेटेड आइटम्स और फ्यूल इन दोनों को हटा देते हो, किसमें, कोर में। ध्यान रखना, इन्फ्लेशन CPI दो तरीके का, एक हेडलाइन है और एक कोर है। हेडलाइन में आप सारी कमोडिटीज ले लोगे और कोर में क्या करोगे, आप फ्यूल और फूड हटा दोगे, तो वो कोर इन्फ्लेशन बन जाएगा। ठीक है सर, तो हेडलाइन और उसमें डिफरेंस पता चल गया। इन्फ्लेशन टारगेट कमिटमेंट ये थी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी डिस्कस किया हमने ऊपर, बेचना और खरीदना कौन करेगा, ये RBI करेगा। इनहांस गोल्ड लोन लिमिट, ठीक है, गोल्ड लोन की लिमिट को उन्होंने इनहांस किया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बुलेट रीपेमेंट स्कीम, ये बुलेट रीपेमेंट स्कीम क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, बुलेट रीपेमेंट स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है किससे जुड़ी हुई, ध्यान रखना। बुलेट रीपेमेंट स्कीम जुड़ी हुई है गोल्ड से, किससे जुड़ी हुई है, गोल्ड से, ध्यान रखना। गोल्ड रिलेटेड जो क्या कहते हैं, गोल्ड रिलेटेड जो लोन्स होते हैं उनसे जुड़ी हुई होती है बुलेट रीपेमेंट स्कीम। इसमें क्या करते हैं ना, बुलेट रीपेमेंट स्कीम में एक रीपेमेंट करते हैं जो लमसम पेमेंट होता है। ठीक है, जो ओवरऑल आउटस्टैंडिंग जितना अमाउंट आपको देना होता है ना, उसका एक लमसम पेमेंट एक सिंगल गो में आप कर देते हो। ठीक है, और ये गोल्ड लोन से जुड़ी हुई होती है, दैट इज बुलेट रीपेमेंट स्कीम। ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि बुलेट रीपेमेंट स्कीम किससे जुड़ी हुई है, तो गोल्ड लोन से जुड़ी हुई स्कीम है सर। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, एक रीपेमेंट कर देते हो, एक लमसम अमाउंट जो कि आपका आउटस्टैंडिंग जितना अमाउंट है उसका एक लमसम पेमेंट कर देते हो, और यूजुअली मैच्योरिटी पे करते हो। ठीक है, तो उन्होंने उसकी जो लिमिट है उसको क्या किया है, इंक्रीज किया है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में आप जान रहे होंगे, PSL क्या होता है।
पीएसएल क्या होता है सर? सारे जो बैंक्स होते हैं उन सारे बैंक में मान लो, बैंक में लोग पैसा जमा कराते हैं, लोगों ने मान लो टोटल 100 रुपए जमा कराए और 100 रुपए को आगे क्या करेंगे, वो बैंक वापस लोन देंगे, ठीक है। और यहाँ जो इंटरेस्ट हम लोगों को जो इंटरेस्ट देंगे, हम लोगों को कॉमन मैन को, वो 2-3-4% होता है। आगे जो देते हैं, आगे जो लेते हैं लोन जिनको वो देते हैं 10-12-15% इंटरेस्ट लेते हैं, और बीच का जो स्प्रेड बनता है वही बैंकों की कमाई है। अब होता क्या है, बैंकों में मान लो हम लोगों ने या कॉमन मैन ने 100 रुपए जमा कराए, 100 रुपए जब कॉमन मैन ने जमा कराया है, वो 100 रुपए में से पूरा पूरा 100 रुपए वो आगे नहीं दे सकता, और जो 100 रुपए जमा कराया है उसको कहते हैं उसका टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। क्या कहते हैं? टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जितना पैसा बैंकों में जमा हुआ है, ठीक है। अब ये जो जमा हुआ है अंदर, वो सारा का सारा वो आगे लोन नहीं दे सकता। ये जो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, उसके ऊपर सबसे पहले सीआरआर लगता है, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। और सीआरआर क्या होता है? अगर 100 रुपए आपके पास बैंक में आया है, तो 100 रुपए का 4% नियरली उन बैंक को क्या करना पड़ता है? आरबीआई के पास अकाउंट में रखना होता है, ठीक है। तो हर बैंक का आरबीआई के पास अकाउंट होता है, तो वो बैंक जितना पैसा आया, 100 रुपए आया ना, तो 100 रुपए का 4%, 4 रुपए जो होगा वो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये 4 रखने के बाद 96 बचा, ये 96 जो बचा ये उसका हो गया नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो है, उसमें उसके ऊपर भी ये पूरा का पूरा वापस आगे नहीं दे सकता लोन में, उसके ऊपर भी उसको 18% क्या करना होगा, अपने 18-19% एक होती है रेट, उसको कहते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सीआरआर तो आरबीआई को दे दिया, और एसएलआर जो होता है वो रिमेनिंग का 18% 19% जो होता है वो बैंकों को अपने ही पास रखना होता है, आरबीआई को नहीं देना है, अपने पास रखना है, ठीक है। तो सीआरआर और एसएलआर निकालने के बाद जो पैसा बचता है, उस पैसे को वो आगे क्या करता है? लोन में देता है। क्लियर सर? अब वो जितना बचा है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, जितना बचा है रिमेनिंग, उस रिमेनिंग का भी जो 40% होता है, वो 40% के लिए आरबीआई ने एक स्कीम बना रखी है, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल, ठीक है। तो क्या होता है, वो सेक्टर्स जो कि थोड़े से वल्नरेबल हैं, जो कि सेक्टर्स को पैसा नहीं मिलता, क्रेडिट क्रंच रहता है, एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के अलावा जो अदर जो डिसेबल्ड है, ट्रांसजेंडर्स हैं, ठीक है, जो वल्नरेबल एससी एसटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, उनको उन्होंने पीएसएल में डाल रखा है। तो 40% जो रिमेनिंग का है वो भी वो उनको बैंकों को किसमें देना होता है? पीएसएल में देना होता है, ठीक है सर। दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। स्टांस ऑन अकोमोडेशन, ठीक है सर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रीजन फॉर मेंटेनिंग अनचेंज बेंचमार्क, अब अभी अनचेंज क्यों किया, कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, वो सब रिजिलियंस है सर, हमारी इकोनॉमी रिलेटिवली रिजिलियंस रही है अदर इकोनॉमी के कंपेरिजन में। क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्रीवियस रेट हाइक्स, तो प्रीवियस रेट हाइक्स जो हमने बढ़ाई है उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है। कमिटमेंट ऑन, ये ठीक है, बात कर लीजिए। कंसर्न अबाउट फूड प्राइस शॉक्स, फूड प्राइस शॉक्स पे तो बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। और क्या है सर? हाई इन्फ्लेशन एज अ मेजर रिस्क, आरबीआई रेज्ड सेवरल कंसर्न, कंसर्न तो है ही है सर, हाई इन्फ्लेशन मेजर रिस्क है। एक्सटर्नल हेडविंड्स तो पता ही है आपको कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन, अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एंड चाइना रशिया एक्सिस, इंडो पैसिफिक में चाइना के आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्सटर्नल हेडविंड्स तो है ही है सर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या है आरबीआई के। देखो आरबीआई के शुरू में बताए थे, कुछ क्वालिटेटिव है और कुछ क्वांटिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव में पहले बात कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव में अभी बताया था कि 100 रुपए अगर आपके पास है बैंक में जमा हुए, तो 100 के 100 वो आगे लैंड नहीं कर सकता। जब 100 के 100 आगे लैंड नहीं कर सकता, तो कुछ पैसा रखना है आरबीआई के पास, 4% जो रखना होता है उसी को क्या कहते हैं? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो पोर्शन ऑफ बैंक्स डिपॉजिट हेल्ड एट कैश रिजर्व विद द आरबीआई, तो सीआरआर किसके पास रखना होता है? आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। अब वो सीआरआर रख लिया आरबीआई के पास, फिर जो बचा 96, उस 96 का भी 18-19% अपने पास रखना होता है, उसको कहते हैं सर एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और परसेंटेज ऑफ बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, क्योंकि 4% निकालने के बाद उसका क्या बचेगा? एनडीटीएल बचेगा, टू बी मेंटेन्ड इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, तो उसको बैंक को अपने पास रखना होता है, ठीक है। तो सीआरआर और एसएलआर, इन दोनों की रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। तो ये हो गए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। फिर आती रेपो रेट, रेपो रेट शुरू में देख लिया था, इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू द कमर्शियल बैंक, शुरू में देख लिया था। रिवर्स रेपो इसका उल्टा, रिवर्स रेपो क्या होता है? इसका उल्टा। रेपो में क्या हो रहा है? बैंक्स के पास जो पैसा है, सॉरी, बैंक आरबीआई से पैसा ले रहे हैं, रेपो में ये हो रहा था। रिवर्स रेपो में उल्टा हो जाएगा। रिवर्स रेपो में क्या है ना, बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो आरबीआई में उसको पार्क कर रहे हैं ताकि कुछ इंटरेस्ट कमा पाए, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है सर।
आरबीआई को पैसे की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट में कमर्शियल बैंक एसबीआई को पैसा चाहिए, एसबीआई आरबीआई के पास जा रहा है पैसा दो, तो आरबीआई एक इंटरेस्ट रेट ले रहा है, वो रेपो रेट है। रिवर्स रेपो उसका उल्टा है, बट आरबीआई पैसा नहीं मांग रहा है एसबीआई से, एसबीआई के पास ज्यादा पैसा रखा है, तो ज्यादा पैसे को वो आरबीआई में रख देते हैं ताकि उस पर इंटरेस्ट मिले, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, बैंक रेट जो है वो करीब करीब रेपो जैसा है, बट ये थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला रेट है। रेट विद आरबीआई पर लॉन्ग टर्म फंड्स। रेपो रेट शॉर्ट टर्म है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म है। बैंक रेट ऑब्सक्यूर है, नहीं यूज होता है, पेनल्टी वगैरह के लिए यूज होता है, मेन रेपो यूज होता है। बैंक रेट पुराना कॉन्सेप्ट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन बताया शुरू में कि आरबीआई क्या कर रहा है, बेचता है और खरीदता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये इन दोनों को मिला के बनती है, रेपो और रिवर्स रेपो। ठीक है, तो रेपो और रिवर्स रेपो दोनों को कंबाइंडली क्या कहा जाता है? एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बिकॉज इन दोनों का यूज करके लिक्विडिटी को क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है मार्केट में। देन कम्स द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो यहाँ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बिल्कुल रेपो रेट जैसे ही है। ठीक है, रेपो रेट में क्या हो रहा था? रेपो रेट में क्या हो रहा था? आप एसबीआई को बैंक से पैसा लेना था आरबीआई से, एसबीआई ने आरबीआई से पैसा लिया और आरबीआई ने एक इंटरेस्ट रेट उस पर चार्ज करी। ठीक है, एमएसएफ भी वैसा ही है, बट एमएसएफ में क्या है कि आप ओवरनाइट फंड लेते हो आरबीआई से, शॉर्ट टर्म ही है ये भी, बट जब रेपो वाला ऑपरेशन होता है, उस रेपो वाले ऑपरेशन में आप ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करते हो? प्लेज करते हो रेपो रेट में। मतलब अगर आरबीआई से पैसा ले रहा है बैंक, तो बैंक को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेज करना पड़ेगा। आप जाते हो बैंक जाते हो कि पैसा हमको लोन चाहिए, तो बैंक कहता है लोन दे देंगे, कुछ सिक्योरिटी लाओ, तो फिर वो आपके घर के पेपर ले लेता है या किसी गाड़ी के पेपर ले लेंगे। ठीक है, वो सिक्योरिटी है ना। उसी तरीके से जब एसबीआई जा रहा है पैसा लेने आरबीआई से, तो आरबीआई कहता है कि कुछ प्लेज करो, तो वो प्लेज करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो एसबीआई प्लेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, रेपो में ये होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में सेम का सेम ऑपरेशन है, बस उसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज होती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बैंक है, कमर्शियल बैंक एसबीआई, उस एसबीआई के एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है। आपको एसएलआर पता है? एसएलआर वो वाला मनी है जो 18-19% जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। अब वो बैंक को अपने पास कैश की फॉर्म में जरूरी है रखना नहीं है, कैश में भी रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में भी रख सकते हैं, गोल्ड की फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप रेपो रेट वाला ऑपरेशन कर रहे हो और आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज कर रहे हो, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपके एसएलआर कोटा की नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, रेपो रेट में। ठीक है, बट अगर आप उस एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यूज करके मनी लेना चाह रहे हो, क्रेडिट लेना चाह रहे हो, तो वो होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आरबीआई यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल सर्विंग एज ए सेकेंडरी फंडिंग सोर्स। मतलब ये आपके किसका है? ये आपकी जो एसएलआर कोटा है, उस एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्लेज कर रहे हो। और क्योंकि एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज करने का आपको लिबर्टी दिया जा रहा है, इसका मतलब ये लिबरल काम है थोड़ा, और लिबर्टी है, तो यहाँ पे आरबीआई आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेगा एज कम्पेयर टू रेपो। क्लियर सर? तो एमएसएफ और रेपो रेट एक जैसे ऑपरेशन है, बस एक डिफरेंस है कि रेपो में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज करते हो, वो एसएलआर कोटा की नहीं होती है, एमएसएफ में वो एसएलआर कोटा की होती है सर। ठीक है, और क्योंकि एसएलआर कोटा का यूज करने की लिबर्टी दी जा रही है, इसीलिए एमएसएफ जो है उसमें आप पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। ठीक है सर, सो एमएसएफ इज मोस्टली हायर देन रेपो रेट। रिवर्स रेपो इज ऑलवेज लेस देन रेपो, बिकॉज आरबीआई आपसे जो इंटरेस्ट लेगा वो ज्यादा लेगा, बट वो आपको जो देगा वो ज्यादा नहीं देगा, अथॉरिटी भाई नहीं देगा। और यह क्या है ना, रेपो रेट में कमर्शियल बैंक्स की मजबूरी है कि वो आरबीआई से पैसा लेंगे। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा है, वो आरबीआई के पास रख रहे हैं, तो ये कोई आरबीआई का वो मजबूरी वाला काम नहीं है, मतलब ठीक है, तो इसमें आपको वो जितना देगा उतना ही देगा। तो आप इन तीनों में देखोगे, रेपो, रिवर्स रेपो और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में सबसे ज्यादा मोस्टली कौन होती है? एमएसएफ होती है, उसके बाद कौन? रेपो, और सबसे कम रिवर्स रेपो। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, एमएसएफ, रेपो और रिवर्स रेपो, इन तीनों का जो एग्जैक्टली डिफरेंस बनता है, एमएसएफ का और रिवर्स रेपो के बीच का डिफरेंस, उसके बीच में रेपो होता है, इसको कहते हैं पॉलिसी कॉरिडोर। ध्यान रखना, एमएसएफ और रिवर्स रेपो का जो डिफरेंस होता है, अब मान लो रेपो रेट आपकी कितनी है, रेपो रेट मान लो आपकी 4 है, कितनी है? 4। रिवर्स रेपो रेट आपकी 5 है, सॉरी
रेपो रेट आपकी 4 है, रिवर्स रेपो 3 है, रिवर्स रेपो कम होगी सर। तो ये 4 है, ये 3 है, और ये एमएसएफ जो है रेपो से ज्यादा होगी तो ये 5 होगी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5% है, ये 4% है, और ये कितनी है 3%। तो एमएसएफ और रिवर्स रेपो का डिफरेंस कितना हुआ, 5 माइनस 3, दैट इज 2। तो 2% आपका क्या है, पॉलिसी कॉरिडोर। ध्यान रखिएगा, तो पॉलिसी कॉरिडोर क्या है, एमएसएफ और रिवर्स रेपो के बीच का जो एक कॉरिडोर बनता है, जो डिफरेंस बनता है, दैट इज पॉलिसी कॉरिडोर। ओके, so that's it sir, willful defaulter we will do tomorrow. Okay, so these are the things. ये आर्टिकल आप लोग अच्छे से पढ़ना वापस जाके, बिकॉज आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट डोमेन है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, बताइए और कोई डाउट हो तो पूछिए। एनी डाउट्स? ये पीपीटी तो आपके पास होगा ही, सारे लोगों के पास। हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। ये मॉनेटरी पॉलिसी के दोनों आर्टिकल्स को आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, ओके, जी सर। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप स्टडिंग।